Assalamu alaikum and welcome back with the course code 563 management and the title of the course is Operation Strategies. I'm the same person, Dr. Anil Salman, and today what we are going to start is somewhat related to technology. But before we move forward, let me just give you the recap what we did in lecture number 19. And ladies and gentlemen, we talked about supply chain network strategy. Then we talked about what is the difference between integration and collaboration. फिर हमने बात की presence dilemma की कि जी how the two parties are going to collaborate with each other, and the precondition is that they both are going to have a win-win situation. So हमने different scenarios में देखा. उसके बाद फिर हमने कहा कि जी what are the elements of partnership, and in elements of partnership we talked about that the most important element in partnership is trust. और if you remember हमने game theory का एक पढ़ा था कि there are two like you and me who have committed crime and police is interrogating. अगर हम दोनों commit कर लेते हैं, अगर हम दोनों नहीं मानते, then we go free. But what is the level of trust with each other, that all depends upon it. So therefore, in elements of partnership, there are quite a number of elements, but the most important element is your trust. Now comes the global supply chains. Let's move out of the organizations. We are becoming regional, we are becoming global. तो वहाँ पे आपकी supply chains के dynamics फ़र्क हो जाते हैं, the way they are at the domestic level. And उसके बाद हमने बात की थी कि जी there are different kinds of supply chain strategies and how they are going to impact the strategy. Like आप diverse होना चाहते हैं, आप low cost पे रखना चाहते हैं, आप innovative strategy use कर रहे हैं, what kind of objective you have and how it affects your supply chain. Now moving on to our next level, that is operation strategy with reference to your technology. So before we go into that topic, let us define what technology is. So जब हम technology की definition देखते हैं, technology is basically an input, an important input for the production of goods and services. And we have seen that as times have passed, technology has played one of the vital roles. And if you consider कि जी इस वक्त ये जो बड़े-बड़े mega structures आपको नज़र आते हैं, companies नज़र आती हैं, लेकिन in response to that, in the past 5 or 10 years, 5 will be shorter, in past 10 to 20 years, what has happened कि ये जो आपकी IT companies थी, the tech-based companies, they have actually taken over the top Fortune Forbes list in terms of their revenues, because now the technology has become an essential component, and that's why we say it is an essential part for the production and for the production of goods and services. Then what exactly is technology? Technology is all the knowledge, product process, tools, methods and system employed in the creation of goods and the services that you are providing. So basically it's a kind of input which is improving, or which is making your process much more faster, which is making your production at an optimal level. So technology kya hai? It's basically the technique of producing goods and services. Now as we have defined technology in terms of as it is an input, so therefore this input keep on changing. Technology is a dynamic concept. जो कि हम शुरू में देखते थे कि जी एक आपकी method of production है वो आज नहीं है. It keep on changing, it keep on improving. And what is the core belief कि technology क्या करती है? It actually improves your method of production. It is basically an integral body of technical and organizational and tools used in the production of goods and services. ठीक है? Up there are two kinds of technologies. One is your hard technology and another one is your soft technology. Hard technology क्या करती है? It is basically that is embodied in machinery and equipment, जो कि आपकी hardware जो machinery के अंदर आती है, equipment के अंदर आ जाती है. And soft technology कौन सी होती है? It is basically the know-how and the information that is disembodied from the hard technology. So these are the two kinds of technologies. One is your hard technology and another one is your soft technology. Then moving on to what are the types of technology.
अब जब हम टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नंबर 1 इज योर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, नंबर 2 इज योर प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड नंबर 3 इज योर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। जब हम प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इट इज बेसिकली द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड और सर्विस। जब हम प्रोसेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इट इज बेसिकली द नॉलेज or technique that is used to transform some of the inputs for the production for a given product or service. And when we talk about management technology is the knowledge used to manage the operations of a company efficiently and effectively. Then technology के कुछ components होते हैं. The first component is known as technoware. ठीक है, अब technoware क्या होता है? Object embodied into physical facilities such as machinery, tools and equipment. ये जो चीज़ है, यही हम पिछले हार्डवेयर में पढ़ रहे थे, but that is basically known as technoware. Then comes humanware, that is basically person embodied. पहला है object, second is person embodied into human capabilities such as skills, knowledge, craftsmanship, expertise and creativity. ये सारी आपकी क्या आ जाती है? humanware. फिर आ जाती है infoware. Infoware क्या हो जाता है? These are the records embodied into document knowledge such as specifications, manual, designs, blueprint. अब ये क्या है? आपका record आ गया. And then comes your organware, orgaware. Orgaware is basically with reference to the organization, with reference to your institution embodied into management of organizational frameworks such as management practices, organizational network, methods and techniques. Now these are the technology components. When we classify the technology, we are actually classifying the technology into 3 terms. Number 1 is known as my new technology. अब new technology क्या होती है? It is any newly introduced or implemented technology that has an explicit impact on the way a company produces or provides services. It's a new one. ठीक है, अब उसका एक impact होना चाहिए. Number 2 आपकी आ जाती है emerging technology. Emerging technology is basically, it is any technology that is not yet fully commercialized, but it will become new technology within about few years. यानी अभी वो new technology नहीं बनी, लेकिन अभी it's an emerging technology which is just getting popularity. और last क्या आ जाता है आपका appropriate technology, that is basically the optimal use of technology indicated by a good match between technology utilized and the resources required. तो इस तरीके से हम technologies को क्या कर देते हैं? Classify कर देते हैं. Number 1 your new, number 2 your emerging and number 3 is your appropriate technology. अब आ जाते हैं टेक्नोलॉजी लेवल्स. ठीक है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और टेक्नोलॉजी के अपने भी लेवल्स होते हैं और टेक्नोलॉजी के यूजेज के भी अपने लेवल्स होते हैं. मूविंग ऑन टू द लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वी हैव द हाई टेक्नोलॉजी व्हिच रेफर्स टू एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज्ड बाय अ कंपनी हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक टेक्नोलॉजी की एक ऐसी आउटलुक यूज कर रही हो जिसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसको फिर कहते हैं कि दैट इज नोन एज योर हाई टेक्नोलॉजी. अब उसके अंदर कौन सी आ जाती है? इट एम्प्लॉयज, पहली बात कि जी व्हाई वी वुड कॉल इट एज हाई टेक्नोलॉजी, बिकॉज इट इज एम्प्लॉइंग हाईली एजुकेटेड पीपल सच एज साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टेलीकॉम को देख लो, किसी कंपनी को न्यूक्लियर ये जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान वी हैव दिस नासकॉम, वी पीपल हु आर वर्किंग इन कहूटा, ऑल दीज ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम कर रहे हैं, नो दैट इज योर हाई टेक्नोलॉजी बिकॉज वी रिक्वायर वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल. नंबर 2, वहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस हैं दे आर ऑटोमेटिक एंड दे आर सोफिस्टिकेटेड. नंबर 3, its technology is changing at a faster rate than that of other industries. क्योंकि जैसे जैसे उसके अंदर changes बहुत आ रहे होते हैं. It's a very high tech form. It competes with technological innovation and it has very high level of R&D expenditure. अगर तो ये characteristics किसी firm में हैं, when in terms of using the technology we are saying that okay it is a high technology. Low technology क्या होता है? Low technology refers to simple technologies that have permeated
large segment markets utilized by the company and who has the following characteristics. पहला उसका characteristic क्या है कि it employs people with a low level of education, it uses manuals or semi-automatic operations, then R&D के expenditures बहुत low होते हैं, its technology base is used, is stable with little change, यानी उसके अंदर इतना ज़्यादा change नहीं आ रहा होता उस technology में, and its product produce are mostly the types that satisfy the basic human needs. Then comes your high, low, and then comes your medium technology. It consists of wide range of technologies that fall between high and low. It usually refers to mature technologies that are more amenable than other to technology transfer. So high, low and medium. Then classification of level technological capability at firm level. अब firm level पे हम उसको कैसे करते हैं, क्या उसकी capabilities हैं? Number one, that is known as acquisitive capability. Acquisitive capability क्या होता है? It is the ability needed to acquire and use technology based on instruction and training provided by the supplier. This is classified as a basic level capability. ठीक है? Number two कौन सी होती है आपकी? Adaptive. And when you're adapting to it, it is the ability to adapt existing technology. It is classified as intermediate level capability. Third क्या हो जाती है आपकी? Innovative capability. Innovative capability के अंदर क्या होता है? It is basically the ability developed existing technology and create new technology based on research. Now comes your marketing capability. Marketing capability is the ability for distributing, selling, servicing technological products. Then comes your investment capability. It is the ability to analyze the feasibility of investments technology. Now these are different technological capabilities at the firm level. अब एक और आपने concept बड़ा interesting सुना भी होगा, and you might have read about it. That is basically the difference between your innovation and invention. Now जब हम बात करते हैं invention की, invention is the creation of a novel technology. ठीक है? It could be a product, it could be a process or unknown system. For example, steam engine. Now that is an invention. The telephone, the transistor, the Xerox machine. Now these all were inventions. On the other side, what is innovation? It involves creation of न्यू प्रोडक्ट. वहाँ पे हमने कहा था नोवल प्रोडक्ट. यहाँ पे हम क्या कहते हैं? इट्स अ क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस टू एन ऑर्गेनाइजेशन and introduce them to the marketplace by utilization and commercialization of them. ठीक है? So in invention the product is totally novel, यानी पहले है ही नहीं. For example, steam engine, for example Xerox, for example telephone, for example transistor, they never existed earlier. अब इनोवेशन क्या होती है? जब आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेंशन के अंदर कुछ चेंजेस लेके आ रहे होते हैं, कुछ ट्वीक्स करके आ रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज योर इनोवेशन. ठीक है? अब दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एन इनोवेशन साइकिल. ठीक है? अब इसके अंदर क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर linked through discovery, invention, innovation and market sequence. Now सबसे पहले आपकी क्या आ जाती है? Scientific discovery होती है. It has no instantaneous commercial value. उसकी कोई नहीं होती. ठीक है? सबसे पहले discovery हुई, no commercial value. फिर हम उसके अंदर फिर क्या हो जाती है आपकी? Invention होती है, may never be developed into marketable products. And then comes your इनोवेशन. अब आप क्या करते हैं? इन्वेंशन को आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं और फिर वहाँ से क्या आ जाता है? मार्केट में आ जाता है बाइंग और इग्नोरिंग द इनोवेशन. सो इट मूव्स फ्रॉम साइंटिफिक डिस्कवरी टू इन्वेंशन टू इनोवेशन एंड देन इट कम्स टू द मार्केट, टॉकिंग अबाउट बाइंग और इग्नोरिंग द इनोवेशन. कि जो आपने नई चीज़ लेके आए हैं, नाउ दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर कि वेदर ही एक्सेप्ट्स इट और ही रिजेक्ट्स इट वंस इट इज इन द मार्केट.
अब इनोवेशन के अंदर क्या आ जाता है, वी हैव टू काइंड्स ऑफ इनोवेशंस. नंबर वन इज़ योर इंक्रीमेंटल इनोवेशंस. इंक्रीमेंटल इनोवेशंस आपकी डेली लाइफ में हो रही होती हैं, which includes adaptation, refinement, enhancement of existing product and service. And for example, every time you are the new phone apps आ गए, आपके telephone sets आ गए, आपका computer software आ गया. Now these are all incremental innovations. आप total structure को नहीं change करते, बस उसके अंदर आप क्या ले आते हो, अपनी वो डिफरेंट इसका एक और नया नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने रखा था, कॉल इट कि जब इनोवेशन तो मेजर होती नहीं, सो यू कॉल इट एज द मिनोवेशन. फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स कि जी एक टाइम था लाइक टॉक अबाउट 60s or 60s 70s when people were crazy after Lollywood movies and they would go to cinemas. It was a complete family time entertainment होती थी. उसके बाद एक ट्रेंड आया that after 80s 90s के अंदर that people stopped going to cinema, और वो इतना strong ट्रेंड था कि जी आपका they never call it as the family entertainment. Then somehow after a few years, maybe five or 8 years back, एक रिवाइवल आया सिनेमा का कि जी आपका वो सिनी गोल्ड बन गया, अरीना बन गया, उसके बाद आपके वो जो था सिनी गोल्ड, ऑल दीज काइंड ऑफ सिनेमास ये आए, एंड आपकी डिफरेंट मूवीज़ का स्टाइल भी चेंज हो गया, और वो जो एक रिवाइवल था फैमिलीज़ का वो भी हो गया. Now if you see कि cinema was always there, cinema has been there for the past so many years, but उसके अंदर ups and downs आते रहे हैं. अब nature of cinemas change हो गए हैं, उसके बाद लोग अब different classes के different जगहों पे जाते हैं. Then the movies earlier सिर्फ it was Pakistani and English movies that were being shown in Pakistan, but now it's the Indian movies also, and that has again brought a very different class of people coming to cinema. So again it has become a family thing. Now the point that I was referring to, कि cinema is not a new thing, it has been there since 47, but जो चेंज आया है कि वो सिनेमास की हालत बदल दी गई है, पॉपकॉर्न कल्चर आ गया है, उसके बाद जनाब आपकी ये जो थी the prices of these cinemas are much higher as compared to previous one. तो वो जो क्लास थी वो भी बदल गई है. अब ये जो हमने माइनर चेंजेस किए हुए हैं कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर, नाउ दे आर बेसिकली नोन एज योर मिनोवेशंस. ठीक है, अब ये जो मिनोवेट करना होता है कि एक एग्जिस्टिंग इनोवेशन के अंदर आप उसको एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस के अंदर एग्जिस्टिंग मार्केट को देखते हुए आप वो चेंजेस ले आते हैं. सो दैट इज नोन एज मिनोवेशन. MINNOVATION. So such things do help in terms of creating new product. For example, I give you another story. You might have heard about Ratan Tata, the big industrialist in India. Ratan Tata was going on one rainy day, and he saw one couple on the motorbike, and the woman was holding a child, and the poor soul was getting wet. And Ratan Tata asked himself कि भी मैं इतना बड़ा entrepreneur हूँ, right? And I haven't, the benefits have not reached to these people. ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी हमें कोई ऐसी गाड़ी बनानी चाहिए which is basically in the price of a motorbike, and at least people who are on the bikes, they don't need to get वो जैसे कहते हैं, they don't get wet when it's raining, and they have a car. And he thought of that, and he came up with this idea of a Tata Nano car. Now Tata Nano car is a very small car, and believe me that now it's getting popularity in Germany, it's getting popularity in Europe, in UK. So वो जो टाटा नैनो कार थी, अब ये नहीं हम कह सकते कि इट्स एन इन्वेंशन, गाड़ियाँ तो शुरू से थी, बट दैट्स बेसिकली एन इनोवेशन. दैट इज़ इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आप ऐसा आपने उसको चेंज किया है सो दैट इट एक्चुअली हेल्प्स द कम्युनिटी, इट एक्चुअली वो रिस्पॉन्ड्स टू द कस्टमर पेन. So now no one gets wet in the rain because they can afford a Tata Nano car which is in the price of a motorbike.
Then comes your radical innovation. Radical innovation is basically, it involves entirely new product and services or delivery system. For example, wireless communication. एकदम आपका इंटरनेट आया, आपका वायरलेस सिस्टम आ गया. Now these are all the radical innovations. कि इसने completely आपकी way of thinking को उसने change कर दिया, आपके business models उसने बिल्कुल बदल दिए. अब टेक्नोलॉजी कैनॉट रिमेन इन आइसोलेशन, और टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली हेल्प्स, इट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स द बिजनेसेस, एंड इट्स हाईली इम्पोर्टेंट, एंड इट हैज़ बीन सीन दैट पीपल हु आर यूजिंग high technologies, who are using high-end technologies, they are more जिसे कहते हैं have revenues as compared to other people, because they can actually control things by the use of this technology. But organizations who are a little bit reluctant in using technology, उनके साथ क्या होता है कि जी आपकी जो है who are using technology but not at a good scale, and they more rely on the humans, that is kind of put an impact on their revenues. उनके revenue कम होते हैं, but companies which are using very high tech technologies, उनके revenues भी ज़्यादा होते हैं, transparency भी ज़्यादा होती है, accountability भी ज़्यादा होती है, till that technology is working properly. You can see the remarkable change in the performance of banks. जब उससे पहले वो बड़े बड़े खाते लेके बैठे होते थे, and the sign of computer was nowhere. अब आप online transfer करते हैं, easy पैसा कर लेते हैं, and your money reaches from one point to another within seconds. So how is it possible? If technology was not there, आपकी innovations होनी नहीं थी, और as such अगर होनी थी तो they wouldn't have that impact जो कि आजकल technology ने किया है. Now there are three different pictures that you are seeing. In the first one, what you are saying, that's basically science and technology push. ठीक है? Now technology is basically actually coming from the science. So what is this is doing, that scientists are pushing towards new development. The push opens new vistas for industrial development and economic growth. कि जी अब science push कर रही है technology को. Number 2 क्या आ जाता है, market pull. अगर आप second design में देखें, that is your market pull. The pull stimulates incremental technological improvements. यानी जैसे जैसे market कह रही है, आप उसके अंदर वैसे वैसे respond करते हैं. I was in the market, I saw कि wet wipes होती हैं, Pampers की अगर आप wet wipes देखें तो they are very much in the market, almost in every store. लेकिन अगर आप उसकी product की देखें, innovation के earlier वो क्या करते थे, उसकी जो ओपनिंग होती थी सेंटर में, there was just a sticker, और आप उससे टिश्यू निकाल लिया करते थे. लेकिन given that these are wet wipes, तो वो ड्राई हो जाया करती थी. अगर आपने बिल्कुल उसको ढक भी दिया है तो still with the opening your tissues would get dry, तो फिर उनको wet wipe रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता था. So what they have done is that now what Pampers have done, that they have actually made this plastic lid on it, कि भी आप उस lid को बंद कर दें, and these tissues remain wet, these tissues remain fresh. Now that is basically the second आपको दिखाया जा रहा है कि जो मार्केट को फोर्स करती है कि मुझे इस किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए. मार्केट ने, कस्टमर ने बताया कि भाई देखें अगर आपके टिश्यूज खुले रहते हैं तो दे बिकम ड्राई, so it doesn't serve the purpose of being a wet wipe. So therefore now they have placed a lid on that, the plastic lid. ठीक है? And it's a good initiative. So but that one is known as basically your market pull. Your market is actually pushing you. Then comes the combined effect of your technology push and market pull. In this, your market is also pulling, your market also needs it, and your science is also pushing, and let's go for that. Such kind of a hybrid model is known as technology push and market pull model. Now, what are the different key concepts in terms of your technological learning, the relationship between key concepts concerning technological innovation? Now what you're doing is that administrative capabilities plus inventions, discoveries, technologies plus technological innovations, they lead to
दे आर इक्वल टू टेक्निकल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कमर्शियल वर्ल्ड। जो टॉप 3 हैं वो आपका क्या बन जाता है, आउटपुट है। उसके बाद आप देख रहे होंगे इक्वालिटी का सीन, उसके बाद 2 सिचुएशन को उन्होंने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, योर इन्वेंशंस एंड योर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो दैट लीड्स टूवर्ड्स योर टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन inventions, discoveries and technologies. Number 1, what we are doing the experimenting, we are doing research activities, we are doing development activities. And what are we doing in technological innovations? That's basically product process development activities, market development activities. These things are happening at that end. So ये है आपका basic concept between technological innovation. Now second आपका क्या आ जाता है important aspect, that technology is the only means for improving market performance. That's a pretty strong sentence, but yes, that's true. कि जी performance हमने देख लिया था, that is basically output generated divided by inputs invested. और एक साइड पे आपके inputs हैं और दूसरी साइड पे आपके क्या जाते हैं, marketable outputs आ जाते हैं. After this process, after using the technology, after using this batch production, automation, mass production, what kind of menu you want to use, different technologies को use करते हुए अपने targets को पूरा करते हुए, and in this way आपका क्या हो जाता है, performance market में बेहतर हो जाती है. What is the strategic role of technology? Technology should protect or support competitive priorities. It should always be supporting the competitive priorities. Number 2, there are 3 applications, product technology, process technology and information technology. जब हम products की बात करते हैं, we are talking about telephone, CDs, fiber, optic cable. Processes की बात करते हैं, that is basically flexible automation, CAD. और information technology की बात करें तो then there are so many terminologies like POS, EDI, ERP, B2B. So that is basically your strategic role of technology. Now coming on to this slide is basically that अगर आप market की performance को improve करना चाहते हैं, the general concept or hypothesis is that technology is the main mover and shaker in the market because it actually broadens the market share. It actually जिसे कहते हैं ना, market opportunities को ज़्यादा कर देता है. It actually creates niche for you in the process. Like अगर आप देखें, there are available inputs and then there are market inputs. और इसमें value addition क्या हो रही है, डिफरेंट आपकी प्रोडक्शन टेक्निक्स हो रही होती हैं. फॉर एग्जांपल यूनिट प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, या आपकी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन हो रही है. अब इसमें क्या है आपकी, जो अगर हम मार्केट की अगर हम आपकी फर्म परफॉर्मेंस को देखें, फर्म परफॉर्मेंस इज बेसिकली आउटपुट डिवाइडेड बाय योर इनपुट्स, यानी वैल्यू कितनी आपको कितनी मिली है डिवाइडेड बाय योर कॉस्ट. सो जितनी बेहतर आपकी टेक्नोलॉजी होगी उतनी ज़्यादा वो आपकी मार्केट परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा. लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर that is not going to improve your market performance, because in the market we have competition, and that's what it says in the first thing, that technology should support competitive priorities. In the market we are not alone. And in the market when we want to create a niche कि मेरा जनाब क्या है जिसे कहते हैं competitive advantage और sustainable competitive advantage, उसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है. I'll take an example of schools. जो आपके ट्रेडिशनल स्कूल्स हुआ करते थे वहाँ पे आपकी आया करती थी, लाइक एक होती थी तख्ती, ऑल दैट, जो ट्रेडिशनल का इंक, चॉक्स, द ब्लैक बोर्ड. Now when you see that and education was a cheap good, it was a public good, but now what you see is कि जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, आपका क्लासरूम का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल गया है. द क्लासिक एग्जाम्पल वुड बी राइट नाउ यू आर नॉट इन द क्लासरूम, राइट नाउ you are just watching me on a CD or on your computer, and you will be getting the same degree what other students get. अब ये इसी वजह से possible हुआ है because technology enabled us. और अब टेक्नोलॉजी के इस तरीके से इतने चेंजेस आते जा रहे हैं कि आपका जो बिजनेस मॉडल से वो आपके क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं.
रिटेलिंग था बहुत स्ट्रांग एक कंपोनेंट बिजनेस का, उसके बाद रिटेलिंग के अंदर आपके सेल्समैन की बहुत ज़रूरत होती थी। अब क्या आ गया, नाउ इट्स ई रिटेलिंग, ठीक है। अब जो आपकी ई बिजनेस आ गया, आपके जो इंटरनेट शॉपिंग आ गई, दैट हैज़ टोटली चेंज द मॉडल नाउ, दैट हैज़ ओनली बिकॉज ऑफ द शॉपिंग। सो नाउ आई वाज टेलिंग यू अबाउट द स्कूल्स कि जी ट्रेडिशनल स्कूल्स हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी का बहुत कम उसके अंदर अमल दखल हुआ करता था, बट मूविंग ऑन टू दीज न्यू technologies and now these because of this एक जो consumer को affect हुआ है that the prices of such products have become much higher, इतना competition आ गया है that people who are not using it they remain behind. So जो आपकी जो technology है that has actually increased the choices but has also increased the price. Now you can see the price of getting an education. कहाँ पे you could have gotten a master's in 5,000 or 10,000, but now it costs more than 20. 10 लाख भी लग जाता है depending from which university you are doing. So it has become very expensive. Technology ने, access ने, आपको जो facilities मिल जाती हैं, so that has made the product much more expensive. अब 3 एप्लीकेशंस हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की, प्रोडक्ट में होती है, प्रोसेस में होती है और आईटी के अंदर होती है। जब हम प्रोडक्ट में बात करते हैं तो टेलीफोन, सीडीज, ऑप्टिक फाइबर्स, प्रोसेसेस के अंदर बात करते हैं तो वो जो हमने कहा कि ऑटोमेशन आ जाती है, आप पहले बैच कर रहे थे, फिर अब टोटली मास प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ सेल आ गया, ईडीआई आ गया, ईआरपी आ गया, B2B, वी विल डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। देन व्हाट हैपेंस कि टेक्नोलॉजी अब जो हमें चाहिए फॉर कंपेटिटिव एडवांटेज, इसमें क्या होता है कि इसके कुछ नेगेटिव पोटेंशियल्स हैं और कुछ इसके पॉजिटिव पोटेंशियल्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, इट हैज़ बोथ द नेगेटिव्स एंड बोथ द पॉजिटिव्स। Now, what are the positives behind it? That obviously we have seen कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपके प्रोसेसेस क्या हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाते हैं, वो एफिशिएंट हो जाते हैं, आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। देन इट इज़ मेंटेन अप टू डेट स्टैंडर्ड, जो आपके जैसे जैसे आपकी इम्प्रूवमेंट आ रही होती है उसको वो अप टू डेट रखता है। थर्ड, यू गेट एन कंपेटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में और कोई आपका उस वक्त कंपेटिटर नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसके पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती। नाउ रिकॉल जब मैं सप्लाई चेन पढ़ा रहा था, मैंने कहा था जी अब कंपटीशन ख़त्म हो गया, फार्म्स का नहीं होता, बेसिकली उनकी सप्लाई चेन्स का होता है। नाउ आई एम सेइंग कि जी अब आपका जो कंपटीशन होता है या व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर हु आर इन द मार्केट इज बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग। नेगेटिव इसका क्या हो जाता है कि जैसे जैसे आप हाई टेक बन रहे होते हैं, जितनी जितनी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं, उतना उतना आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कॉस्ट कर्व्स चेंज हो रहे होते हैं, आप इट बिकम्स एक्सपेंसिव। अभी मैंने वो स्कूल्स की एग्जांपल दी कि शुरू में आप उसकी फ़ी देख लें और अब में उसकी फ़ी देख लें। नाउ आई थिंक इट चार्जेस लाइक 25,000 to 30,000 पर मंथ, सो यू कैन इमेजिन दैट व्हाट इज बेसिकली what is basically the changes in the cost by the use of technology. Then what another important dimension of technology is that we have become dependent upon that. आपकी लाइट चली जाती है and we feel handicapped. You don't have your cell phone. I was telling you that story that the person went in depression just because of Facebook was hacked. So हमारी डिपेंडेंसी उस टेक्नोलॉजी पे इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जो ह्यूमन इंडिपेंडेंसी थी, ह्यूमन क्रिएटिविटी थी, वो अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और इसको सब कुछ लोग कहते हैं टेक्नो क्रिएटिविटी, जी आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी भी है वो भी इट इज़ जस्ट इंक्लाइन टूवर्ड्स द इम्प्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। देन कम्स रिस्क्स सच एज ओवरस्टेटिंग बेनिफिट्स, कि आप उसके बेनिफिट को बहुत ही ज़्यादा बता देते हैं। अभी इफ़ यू हैव सीन सिनेमास के अंदर भी मूवी आई थी जुरासिक वर्ल्ड। अब जुरासिक वर्ल्ड इज़ अ क्लासिक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, कि जी किस तरह उन्होंने डायनासोर्स, लैब्स, सोफिस्टिकेटेड एंड humans start thinking nauz billah that with technology they can control the natural forces, they can control the natural processes। ये अब उसका नेगेटिव है कि जी
हम टेक्नोलॉजी से वी फील एम्पावर्ड, वी फील पावरफुल, वी फील दैट वी कैन ब्रिंग द चेंज, बट अनफॉर्चुनेटली वी फॉरगेट द नेचुरल रियलिटीज़ कि जी देयर आर सर्टन लिमिटेशंस व्हिच वी कैन नॉट। और इंसानों के अंदर यही है कि जी इतनी टेक्नोलॉजी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इट जस्ट डेवलप अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी, जस्ट डेवलप्स वो जैसे कहते हैं ना एक वो belief हो जाता है। For example, I was talking to some students and I said, why you are doing the climate change? It's so important, and you people are not doing anything at an individual level. So why? And they said, well, technology कोई ना कोई आ जाएगी and technology हमें बचा लेगी. So we take technology as a savior and we so much depend upon it. कि जी आप नहीं कुछ कर सकते, there must be some technology. ठीक है? So it actually becomes risky when you are actually promoting so many benefits. तो वो जो मैं Jurassic World की बात कर रहा था, so that was such a highly वो जैसे कहते हैं टेक्नोलॉजी इतनी उन्होंने यूज़ की थी and they thought that there can be no mishappening, and that happened when you're dealing with the natural processes. अब in order to have this technology, what should be having for competitive advantage? Number one, support competitive priorities. कि भी जो आपकी competitive priorities हैं उनको हमें क्या किया जाए, support किया जाए. Number two, आपकी can require change to strategic plan. आपकी अगर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो it can actually change your strategic plans also. So you should be ready for that. कि जी आपने जो एक डॉक्यूमेंट बना लिया है ये चेंज नहीं होगा, मे बी विद दिस पेस्ट, वही जो हम कहते हैं पोलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जब भी आपको कोई टेक्निकल चेंज आएगा दैट इज बेसिकली change your strategic plans. Then can require change to operation strategy. Even your operation strategy जो हम यहाँ बात कर रहे हैं that also changes with technology, क्योंकि पहले आप different method of production use कर रहे हैं, with the increase in technology you are using different kind of technology. So technology is an important and strategic decision. Now what are the managerial issues जहाँ पे आपको ये टेक्नोलॉजी को हमें इस्तेमाल करना होता है? Number one, advances in technology are changing the way in which both manufacturing and service operations are designed. सर्विसेज शुरू में कैसी थी, बैंक्स की आप देख लें, हॉस्पिटल्स में देख लें, स्कूल्स में देख लें, एंड विद दिस इनफ्लक्स ऑफ टेक्नोलॉजी अब क्या हुआ है, आपकी सर्विस मॉडल्स बिल्कुल चेंज हो गए, आपके बिजनेस मॉडल चेंज हो गए, आपकी सप्लाई चेन थी वो बदल गई हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजी इज अ टूल, not an end in itself. Technology is basically one of the inputs that improves your output. Then importance of maintaining compatibility between technology and organizations, other elements. It is very important. Okay, whenever we are introducing any new technology, your customers need to know about it. Your employees should be comfortable without it. If no one knows that technology, then there is no benefit. वो maybe market से वैसे ही eliminate हो जाएगा. Then you need continuous training in the terms of use of technology. आपने technology तो ले आए, लेकिन technology को implement करने वाला तो human being ही है ना, तो आपने उसको भी क्या करना है, साथ साथ उसकी capacity building करनी है, उसकी training करनी है, so that he is able to use this technology. Then comes how technology affects your operations. अब ऑपरेशंस के अंदर हमने पढ़ा है वही जो पीछे हम पढ़ रहे थे, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, लेकिन अगर हम टिपिकल ऑपरेशंस में देखें तो ऑब्वियसली इट लोअर्स द कॉस्ट्स. जितना बेहतर आपकी टेक्नोलॉजी आपका प्रोसेस होगा उतना ही आपकी कॉस्ट कम होगी. नंबर टू, speed of delivery. With technology, yes, you have started delivering at a much faster pace. Like talk about DHL, TCS, as compared to Pakistan Post, their service is much better. How come? Because they have this technology of flying, they have this technology of tracking it, and everything. Then comes quality of product and service. So traditional trade-off क्या होता है कि अगर आप quality लाना चाहते हैं तो आपको उस तरीके की नहीं मिलेगी, because it will add more money to it. And last one is your customization. कि जी आपके operations जो trade off है वो आपकी customization में भी आ जाती है कि जितना ज़्यादा customize करते हैं you need to have that sort of technology. Now technology's impact on traditional trade-offs. Trade-offs are no longer valid. Technology allows firms to compete on several dimensions at once. यानी आपको सारे अब most of the objectives of simultaneously अब आप achieve कर सकते हैं. Now this is how technology impacts your operation level.
On the horizontal axis you would see there is delivery, on the vertical axis you will see there is cost. अब आप देखें, आप फास्ट से स्लो में जा रहे हैं और आप लो से हाई में जा रहे हैं. कॉस्ट ऊपर हाई है, नीचे लो है. स्पीड ऑफ डिलीवरी यहाँ पे फास्ट है और आगे चल के वो स्लो हो जाती है. नाउ व्हाट यू डू इज दैट यू हैव कर्व ए और इससे आप क्या चले जाते हो, कर्व B1 पे चले जाते हैं. जैसे आप कर्व B1 पे चले जाते हैं लोअर लेवल पे, तो देन व्हाट हैपन्स कि जी आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वही रहती है, लेकिन आपका जो है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वही रहती है ऑन द सेम इन डिफरेंस कर्व्स. फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 सेम इन डिफरेंस कर्व, आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वही रहती है. जब B1 पे निचले कर्व पे चले गए तो आपकी क्या हो जाएगी, वो जो है सेटिस्फैक्शन लेवल वो चेंज हो जाता है. नाउ इट इज़ लोअर. जितना आपका, इसको हम के भी कहते हैं, दिस इज नोन एज अ टेक्नोलॉजी इन डिफरेंस कर्व्स. जितने आपके IC कर्व्स नीचे होते हैं उतना ज़्यादा आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होगी. जैसे जैसे वो ऊपर होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाती है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी ऑटोमेशन डेवलपमेंट होती है. फॉर एग्जांपल मशीनिंग सेंटर है, इट्स वन ऑफ द एरियाज इन मैन्युफैक्चरिंग. अब इसमें क्या करेंगे, ऑपरेशंस वेयर टूल्स आर चेंज ऑटोमेटिकली एज पार्ट ऑफ प्रोसेस. देन न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स, इनको हम कहते हैं NCM. अब इन्होंने क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट दैट इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर, क्या आप अपने कंप्यूटर से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं. फिर इंडस्ट्रियल रोबोट्स. इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या होती हैं, दीज आर प्रोग्राम मशीन्स जिनको आप मल्टीपल फंक्शंस देते हैं काम करने के लिए. उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसको हम ऑटो कैड या कैड भी कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट्स यूजिंग स्पेशली इक्विप्ड कंप्यूटर. अब जितने भी आपके नए आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, शुरू में याद होगा आर्किटेक्ट्स बड़े बड़े पेजेस लेके लाइनें डाल रहे होते थे, ड्राफ्टिंग कर रहे होते थे, ऑल दैट. अब सारा कुछ कंप्यूटर में हो रहा है एंड दिस इज़ बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, या इसको असिस्टेड डिज़ाइन भी कहते हैं, कैड. देन कम्स computer assisted design manufacturing system, CAD/CAM, integration of design and production of a product through use of computer. So this is how automation has been done in manufacturing sector. अब आ जाएं कि FMS क्या होता है. FMS क्या होता है, it's basically manufacturing facility that is automated to some extent and produces a wide variety of प्रोडक्ट. क्योंकि वही FMS नाम ही होता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. देन कम्स कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग. कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थ्रू कंप्यूटर. यानी जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस हैं, आप उनको क्या करते हैं, यू इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, एंड इन दिस वे दिस इज नोन एज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग. देन कम्स आइलैंड्स ऑफ ऑटोमेशन. Islands of automation क्या होता है, automated factories or portions which include NC, जो भी हम पीछे कर रहे थे, equipment, automated storage, retrieval systems, robots and machining centers. Now जब ये सारी चीज़ें आ जाए, so that is basically known as your island of automation. Then what are the major categories of software systems in manufacturing? एज यू सी के जी जैसे जैसे हम मार्केट्स के अंदर जाते हैं और जैसे जैसे आप रियल वर्ल्ड के अंदर एंटर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टडिंग एंड थ्योरेटिकली, यू विल सी कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं. और जो हम किताबों में पढ़ा करते थे वैसे नहीं हैं, उससे ज़्यादा नेचर इससे डिफरेंट है. अब इसके लिए क्या होता है कि जब हम करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं, तो हर सिस्टम के लिए आपको separate kind of software system, क्योंकि every system has its own detail और it has its own task. अब एक साइड पे आपने क्या रखा हुआ है, vendors, और एक साइड पे आपके क्या हैं, customers. You are the firm. अब what you are doing is that you are a manufacturing firm और ये आप different आप लगा रहे हैं, SCM, NPD, CRM, ERP, और ये सारे आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं. कुछ आपके वेंडर के साथ कर रहे होते हैं और कुछ आपके कस्टमर्स के साथ कर रहे होते हैं. अब हमने पीछे पढ़े थे ऑटोमेटेड सिस्टम. नाउ ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू, जैसे कहते हैं,
cram these names, लेकिन जैसे जैसे आप firms के अंदर या अच्छी multinationals के अंदर काम करते हैं, you will see that these topics are very much discussed, they are very much updated, and the Western MNCs are very much using such tools. तो ऑटोमेटेड के बाद आ जाता है आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम. नाउ दिस इज द सॉफ्ट टेक्नोलॉजी. इफ यू रिमेंबर मैंने पीछे पढ़ाया था हार्ड टेक्नोलॉजी एंड द सॉफ्ट टेक्नोलॉजी. अब हार्ड सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले आपकी ERP आ जाती है. ERP इफ यू रिमेंबर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है, प्रोवाइड्स अ कॉमन सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटाबेस. नंबर 2, supply chain management, controls interaction with suppliers in the overall supply chain. Then comes your new product development, NPD, links the engineering function with the operations function. और last आपका क्या आ जाता है, CRM, that is basically customer relationship management, manages the interface between the firm and its customers. Now, what are the functional areas as independent operations? ऑपरेशंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी इंजीनियरिंग है, HR है और फाइनेंस है. नाउ दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स. अब हम क्या करते हैं कि क्या ऑपरेशंस वाले को फाइनेंस के बारे में पता है, क्योंकि फाइनेंस एंड ऑपरेशंस आर रिलेटेड विद ईच अदर. ऑपरेशंस को कोई चीज़ चाहिए, दे कॉन्टैक्ट द फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट करवानी है फाइनेंस, एवरीथिंग. सो हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, दिस इज इट. कि इनको क्या कर देता है आपका ERP सिस्टम क्या कर देता है, इन सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स को फर्म के अंदर क्या कर देता है, आपको कंबाइन कर देता है. नाउ यू डोंट हैव टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर, बिकॉज अब आप अपनी ही सीट पे बैठ के यू कैन ईजली सी कौन सी जगह पे कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है. सो ERP हैज़ बीन अ ब्लेसिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अब ये क्या है आपका, this is basically your 3D modular integration कि आपके different आपके वो हैं, quality management है, plant management है, human resource, production planning, material management, sales distribution, financial accounting, controlling, fixed asset management, project management, workflow, industry solutions. अब इन सारों को हमने क्या किया हुआ है, integrate किया हुआ है by using IT. पहले तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, now we are talking about information technology. अब लीडिंग सॉफ्टवेयर ERP कंपनीज एंड रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर के जो आपकी हैं कि कुछ कंपनीज हैं जो कि ERP सॉफ्टवेयर बनाती हैं, which actually allows you to connect with all the departments. अब उसमें सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो मार्केट शेयर है, that is 30% of SAP, फिर 14% Oracle, फिर 7% PeopleSoft, फिर this one is JD Edwards, and then that is Bond. So just at the bottom अगर आप देखें तो इनका मार्केट शेयर में सबसे ज़्यादा आपका SAP का है. और टोटल ERP सॉफ्टवेयर एंड रेवेन्यू सर्विस की ये इंडस्ट्री, इट्स अबाउट 19 बिलियन. नाउ इतना हम पढ़ रहे हैं, इतना हम कह रहे हैं ERP, व्हाट एग्जैक्टली इज ERP. ये बात स्टार्ट होती है अराउंड 1960s-70s के अंदर. ERP systems origins and outgrowth of material requirement planning. If you remember, जब मैं वो सप्लाई चेन पढ़ा रहा था, मैंने हिस्ट्री ऑफ सप्लाई चेन में तो हमने MRP पढ़ा था. MRP in the 1960s and 70s, adoption of ERP systems updated the entire information technology infrastructure of firms. अब इसके बेनिफिट्स क्या हुए ERP के? नंबर 1, रिडक्शन इन डेटाबेस एरर्स. कि जी आपके जो डेटाबेस में आप जो डाटा एंटर कर रहे थे, अब वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही मशीन कर रही होती है. सो दैट इज़ उसके एरर कम हो गए. फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स. अब जो आपका है कस्टमर, वो आपको जल्दी रिस्पॉन्स देता है, जल्दी फीडबैक दे देता है टू द फर्म कि हाउ ही और शी इज़ फीलिंग अबाउट द प्रोडक्ट. देन फास्टर ऑर्डर फुलफिलमेंट. ऑब्वियसली ERP से जो आपके रिजल्ट्स होते हैं दे आर मच फास्ट एज कम्पेयर टू योर नेचुरल वर्क. एंड देन बेटर ओवरऑल कम्युनिकेशन. इस पे मुझे थोड़ा सा है रिजर्वेशन, क्योंकि जितनी आपकी इंटीग्रेशन हो जाती है, येस नाउ यू हैव मोर चांसेस टू मीट पीपल, बट ऑन द अदर साइड इशू ये होता है कि आपकी एक तो डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाती है, दूसरा आप में भी आइसोलेशन में चल रहे हैं, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग out of 24 hours you have maybe spent 10 to 12 hours in your spending 10 to 12 hours into another activity. Now
ये वाला जब सिस्टम आया, इसके अंदर बेसिकली व्हाट वी वर लुकिंग इनटू अडॉप्शन ऑफ ERP सिस्टम्स अपडेटेड द एंटायर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फर्म्स। उसने एक का नहीं लिया, उसने टोटल सारों का उसने वो यूनिट्स ले लिए। अब बेनिफिट्स इसके क्या हैं? रिडक्शन इन द डेटाबेस एरर। एक और प्रॉब्लम आया करती थी कि जब आप ये डेटाबेस बना लिया करते थे और ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स नहीं हुआ करते थे, इसमें डेटाबेस में इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाया करते थे, देयर वर लॉट ऑफ एरर्स। नंबर 2, आपका जो कस्टमर का रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, इट इज़ मोर एफिशिएंट। देन देयर इज फास्टर ऑर्डर फुलफिलमेंट बिकॉज यू हैव ऑल द डेटा एंड बेटर ओवरऑल कम्युनिकेशन। सो सम से कि कम्युनिकेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक इसकी ये प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन जो आपकी फिजिकल कम्युनिकेशन होती है, लाइक सिटिंग फेस टू फेस इन मीटिंग्स, वो आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगेन controversial, some people say well it is actually the organizations are becoming more mechanical and they are losing the human touch। at least पहले तो हम मिल लिया करते थे, एक दूसरे के रिएक्शन रिस्पॉन्स को समझ आते थे, वो हमारे इमोशंस पता चल जाते थे, लेकिन when we are communicating through machines तो it has become a difficult part in order to keep on moving। अब क्या आ जाता है कि why ERP systems fail। ठीक है, सक्सेस भी हमने देखी, लेकिन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वी हैव सीन द फेलियर ऑफ ERP सिस्टम। अब वो क्या हुए? लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। रिमेंबर दैट कि जब हमने क्वालिटी टूल्स भी अप्लाई कर रहे थे, जब हम 6 सिग्मा लेके आ रहे थे, जब हम लीन मैनेजमेंट लेके आ रहे थे, जब हम BPR लेके आ रहे थे, एंड नाउ व्हेन वी आर अप्लाइंग द ERP सिस्टम, one of the reasons for the failure is because the top management is not supportive. The top management need to get into need to get involved, need to share the view that why they are doing it and how this particular initiative is going to support the whole business. Sometimes they just order it and it is they think कि जी उनका ड्यूटी बस ख़त्म हो गया, उन्होंने बस नीचे वाले इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन जब तक आपकी टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती किसी वेंचर में, तब तक देयर विल बी नो प्रोग्रेस एंड इट विल बी अ फेलियर। सो गिवन के टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं थी, दैट्स व्हाई इट फेल्स। उसके बाद लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, यू नीड गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस ERP इन योर ऑर्गेनाइजेशन। देन लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। एज आई सेड कि जी अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी देते, अगर आप बहुत अच्छी हाई टेक स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स ले आए और लोगों को चलानी ना है, दैट इज़ ऑल्सो मच मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू प्रीवियस थिंग कि जी आप लोगों को चलानी आ जाए, बट यू आर ऑल्सो गिविंग देम फॉर डेमो, यू आर ऑल्सो लेटिंग देम ट्राई दीज थिंग्स। देन कम्स के लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज हो गया, उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग के ट्रेनिंग्स नहीं है, उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज पीपल डोंट टॉक, पीपल डोंट शेयर देयर आइडियाज। दैट्स व्हाई आपके जो ERP सिस्टम्स हैं वो क्या हो जाते हैं? फेल हो सकते हैं, ही हो जाते हैं। एंड देयर इज आर 2 क्रिटिसिज्म ऑन ERP। क्या है पहला क्रिटिसिज्म? कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ सिंगल ERP सिस्टम वर्सेस मिक्सचर ऑफ बेस्ट ऑफ ब्रीड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। वो कहते हैं जी रादर जब आपने एक लगाना है, इससे बेहतर आप डिफरेंट आपके पास चॉइसेस और आप डिफरेंट ब्रीड ऑफ सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बिल्ट इन बिजनेस मॉडल ऑफ ERP सिस्टम्स। अब टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सर्विसेज की। वो तो हम पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, सर्विसेज में क्या हुआ है? नाउ देयर इज इंक्रीज इन सेल्फ सर्विस। अब किस तरीके से? रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट एंड स्पीड अप द सर्विस। टेक्नोलॉजी ने एक कॉन्सेप्ट क्या दे दिया कि जी नाउ यू कैन यूज इट एंड यू कैन एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हायरिंग समवन। अब आप बड़ी बड़ी सुपर मार्ट्स पे जाएं, कुछ स्मार्ट्स पे होता है दैट यू योर सेल्फ चेकआउट और आपने बस कार्ड दिखाना होता है और सारी चीज़ें आप खुद ब खुद ही वो चेकआउट करते हैं, उसके बाद उनको पैक वो शॉपिंग बैग डालते हैं, देन यू आर आउट। सो इससे फर्म क्या करती है अपना, एक तो उन्होंने स्टाफ कम कर दिया और बिकॉज टेक्नोलॉजी ऐसी है दैट इट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू चेक आउट योर सेल्फ। नंबर 2 होता है कि इट स्पीड्स अप द सर्विस। आपकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो बेहतर रहती है और वो मच मोर फास्टर होती है। बड़ा एक चेंज मैंने देखा, अगर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आप जाएँ, नॉट इन द फॉर्मल डाइनिंग बट ये जो फास्ट फूड के हैं जहाँ पे आपको म्यूज़िक और वो हिप क्राउड नज़र आ रहा होता है, अर्लियर जो आपके पास वेटर आया करते थे, they would write down it on a white paper and the very dirty handwriting. Now what they have done is they have
these small iPads with them. अभी iPad से जिस वक्त आप ऑर्डर दे रहे होते हैं उसी वक्त वो अपना ऑर्डर वो भेज देता है, and that goes straight into your kitchen, और वहाँ से वो चीज़ आपकी बनना शुरू हो जाती है at the moment you have ordered it. Similarly with these drive-thrus में जो होता है कि आप एकदम देते हो और अगले खाना आपको तैयार मिल जाता है. So that is basically because of the technology, कि भी आपकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है. उसके बाद lower costs for delivery of products and services increases remote points of access and reduces the need for specific service location. Now, what are the methods to encourage self-service? Number one, गैस स्टेशन पे अगर आप अपनी सेल्फ सर्विस रखना चाहते हैं तो हायर प्राइस फॉर फुल सर्विस गैस, कि अगर आप किसी सर्विस करवाएंगे तो उसकी गैस की प्राइस क्या हो जाएगी, वो महंगी हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट फर्म, हायर कमीशन फॉर दोज यूजिंग अ ब्रोकर. देन एयरलाइन, रिड्यूस्ड फेयर्स अवेलेबल ओनली ऑन द इंटरनेट, कि अगर आप इंटरनेट से शॉपिंग करते हैं तभी आपको रिड्यूस्ड फेयर. एंड बैंक में क्या होता है, एडिशनल फी फॉर यूजिंग अ टेलर. आप इस तरीके से discourage कर सकते हैं that people don't ask for help, but people with the help of a machine, with the help of technology, they can actually make a difference. Then और क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, शिफ्ट फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट टू नॉन टाइम डिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस. जी पहले हम टाइम डिपेंडेंसी ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम नॉन टाइम डिपेंडेंसी ट्रांजैक्शंस करते हैं. मोर इकोनॉमिकल फॉर द फर्म एंड एफिशिएंट फॉर द कस्टमर forms of service. Then increase in disintermediation. Disintermediation क्या होती है, technology brings buyers and sellers together, eliminating intermediate steps or organization. Now integrating technology into services. Number one, integration benefits क्या हुआ, efficiency in operations, attractiveness in effectiveness in serving customers. Then comes your areas of integration. Areas of integration में आपकी number one आ जाती है service plan, strategic planning. Number two आपकी आ जाती है improve performance. How? By faster service, improve customer knowledge, increase product customization. Then comes your integrating technology into services. How we are integrating in areas for integration क्या है, आपकी increased efficiency. और increased efficiency कैसे होगा, once you are achieving the economies of scale. Reduce labor costs through replacement of manpower and increase labor productivity. Now what are the characteristics of e-services? E-services में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आपका इंटरनेट आ जाता है, आपका इंट्रानेट आ जाता है, आपका एक्स्ट्रानेट आ जाता है. एक्स्ट्रानेट क्या होता है, a resource limited network open only to specified internal and external users. Then comes your EDI. EDI is electronic data interchange, a network designed to support the exchange of data between organization and vendors and suppliers. As we talked about in the partnership model, कि जी आपका data की transparency होनी चाहिए and your vendors could also access it. Then WAN, value-added network, a third-party service that is used in conjunction with EDI to provide the link to the customers and suppliers. अब EDI का क्या रोल है? The role of internet, intranet, extranet, EDI in an organization. Suppliers हैं, organization के अंदर internet है, आपका जो internet system भेजा specific customers की तरफ, general public की तरफ, आपका जो feedback आता है, उसके बाद you can actually make the product according to the needs and demand of the customer. अब हम कौन कौन सी services दे रहे होते हैं, the types of e-services. ये होता है B2C, business to consumer. Then comes C2C, consumer to consumer. Then comes B2B, that is B2B is basically business to business. Then G2B, that is basically government to business. G2C, that is basically government to consumer. Now what are the challenges that are being faced by the e-tailers? Retailers का आपने नाम था, e-tailers. Infrastructure, developing the structure to efficiently and quickly deliver goods. कि सबसे बड़ा challenge क्या था आपका infrastructure. Number two, lack of tangibility, having no physical presence to which customers can turn on with problems. कि जी अगर आपने कोई इंटरनेट से चीज़ खरीदी है and they don't have some hard वो फॉर्म का कोई पोस्टल एड्रेस नहीं है जहाँ पे लोग आपका कंप्यूटर सही कर दें, then you are lost. Pair differentiation, creating a unique online presence that sustains growth. You have to sustain the growth and you have to be differentiating.
Then what are the technology issues? टेक्नोलॉजी इश्यूज़ के अंदर नंबर 1 आपका आ जाता है ओवरकमिंग बैरियर्स टू एंट्री. अब इसमें क्या आ जाता है? फियर ऑफ द अननोन. वाई वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि हमें नहीं पता कि टेक्नोलॉजी किस किस्म की होगी और कैसे हमें रिस्पॉन्ड करनी चाहिए. देन आपके कस्टमर की साइड पे आपका बैरियर होता है. कस्टमर इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज ही हैज़ वेरी लिमिटेड नॉलेज. उसके बाद ट्रेनिंग एंड सपोर्ट वर्कर्स, स्टिल स्किल डेवलपमेंट थ्रू हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड द न्यू टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फेमिलियराइजेशन विद टेक्नोलॉजी. के आपने अपने स्टाफ को बताना है, आपने अपने लोगों को बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ देयर, हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड. उसके बाद व्हाट फ्रॉम द कस्टमर साइड ही नीड्स टू बी, ही मे नॉट बी यूजिंग इट बिकॉज ही इज स्कैर्ड. एंड नंबर 2 कि जो उसके पास नॉलेज ही नहीं है. Well, ladies and gentlemen, that finishes our module over here. This is the first part of technology. आगे अभी हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है. So maybe one more or 2 more lectures on technology, and then we move forward with other stuff that is coming all your way. Till then, take care of yourself, and I'll see you next time. Have a nice day. Allah Hafiz.